श्रीभद्रकाले कवचम् श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच कवचं श्रोतुमिच्छामि तां च विद्यां दशाक्षरीं नाथ त्वत्तो हि सर्वज्ञ भद्रकाल्याश्च साम्प्रतं। नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीं गोपनीयं च कवचं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहेति च दशाक्षरीं दुर्वासाहे ददाौ राज्ञे पुष्करे सूर्यपर्वणे। दशलक्ष जपेनैव मन्त्रसिद्धिः कृता पुरा पञ्चलक्ष जपेनैव पठन् कवचमुत्तमम्। बभूव सिद्ध कवचोऽप्ययोध्यामा जगाम च कृत्स्नां हि पृथिवीं जिज्ञे कवचस्य प्रसादतः। नारद उवाच श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुर्लभा अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं ब्रूहि मे प्रभो। नारायण उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन यद्दत्तं कृपया शूलिने पुरा। त्रिपुरस्य वधे घोरे शिवस्य विजयाय च तदेव शूलिना दत्तं पुरा दुर्वाससे मुने। दुर्वाससा च यद्दत्तं सुचन्द्राय महात्मने अतिगुह्यतरं तत्त्वं सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा मे पातु मस्तकं क्लीं कपालं सदा पातु ह्रीं ह्रीं ह्रीमिति लोचने। ॐ ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा नासिकां मे सदावतु क्लीं कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा दन्तान् सदावतु क्लीं भद्रकालिके स्वाहा पातु मे धरयुग्मकम्। ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा कंठं सदावतु ॐ ह्रीं कालिकायै स्वाहा कर्णयुग्मं सदावतु ॐ क्रीं क्रीं क्लीं काल्यै स्वाहा स्कन्दं पातु सदा मम। ॐ क्रीं भद्रकाल्यै स्वाहा मम वक्षः सदावतु ॐ क्लीं कालिकायै स्वाहा मम नाभिं सदावतु ॐ ह्रीं कालिकायै स्वाहा मम पृष्ठं सदावतु रक्तबीजविनाशिन्यै स्वाहा हस्तौ सदावतु ॐ ह्रीं क्लीं मूर्ढमालिन्यै स्वाहा पादौ सदावतु ॐ ह्रीं चामुण्डायै स्वाहा सर्वाङ्गं मे सदावतु प्राच्यं पातु महाकाले चाग्नेयं रक्तदन्तिका दक्षिणे पातु चामुण्डा नैऋत्यं पातु कालिका श्यामा च वारुणे पातु वायव्यं पातु चण्डिका उत्तरे विकटास्या चाप्यस्यानाशाट्टहासिनी पातूर्ध्वं लोलजिह्वा च मायाद्या पात्वदः सदा जले स्थले चान्तरिक्षे पातु विश्वप्रसूः सदा इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं सर्वेषां कवचानां च सारभूतं परात्परं सप्तद्वीपेश्वरो राजा सुचन्द्रोऽस्य प्रसादतः कवचस्य प्रसादेन मान्धाता पृथिवीपतिः प्रचेतालोमशश्चैव यतः सिद्धो बभूवः यतो हि योगिनां श्रेष्ठः सौबरे पिप्पलायनः यदि स्यात् सिद्धकवचः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् महादानानि सर्वाणि
तपांस्येवं व्रतानि च निश्चितं कवचस्यास्य कलां नार्हन्ते षोडशे इदं कवचमज्ञात्वा भजेत् कालीं जगत्प्रचों शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे गणपति खण्डे नारद नारायण संवादे भद्रकाले कवच निरूपणं नाम 37 अध्यायः।